Good morning, dear students and concerned teachers. I am Smita Patel from TPS High School, Bandpali. Welcome you all to this live virtual class from our Sundargarh district. Wait a minute. God, please help the students of my district to get good marks in English subject. Okay, dear students, what I did? I prayed for you all so that you get good marks in English subject. As I am an English teacher, little bit selfish, you will get good marks in all subjects but more in English subject. Okay, dear students, for so many things we pray to God. You also, isn't it? But have you ever heard of writing a letter to request something? I don't think so. कोई मैंने केबे देखिछ केही केबे प्रार्थना न करी केवल गॉड को कोन लेटर डायरेक्टली लिखिबा कि नाही मोर एई जिंस दरकार आमे सेटा जानिनो ना बट टुडे वी विल लर्न अबाउट अ मैन अ इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ मैन नेम्ड लेंचो who had so many faith in God that when he faced a problem, he wrote directly to a letter to the God. So strange, isn't it? So dear students, today we will learn about this man, okay, and it's his story why he wrote a letter to God. So let's go to the smartboard and enjoy the story, okay. So dear students, first of all, we'll know about our author, okay. So the author name is so long but you have to remember, okay. Gregorio Lopez Fuentes, short you can say G.L. Fuentes, born in 17th November 1895 at Huasteca in Mexico City. You can see here Mexico City देखा जाउछि ना वर्ल्ड मैप रे कोठी उत्तर अमेरिका रे अछि मेक्सिको सिटी से कोठी जन्म ग्रहण करथिले मेक्सिको सिटी रे जन्म ग्रहण करथिले के हमर ऑथर ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस हला in short G.L. Fuentes you can see. So he was died in 10th December 1966 at Mexico City itself. He was a Mexican novelist अटंती, poet अटंती एवं journalist मध्य अटंती. He had started writing at the age of 15. At the age of 15, से 15 वर्ष बयस रु लेखिबा आरंभ करथिले. When the Mexican Revolution began, हमर एंती तो हमर आंदोलन जेंती चलथिला जेतेबेले रिवोल्यूशन जेंती चलथिला तांकर टीवी जेंती जेतेबेले मेक्सिकन रिवोल्यूशन चलथिला सेही समयठु से कोन तांकर लेखा लेखिबा आरंभ करथिले. His books are related to civil conflict. हमर जो सामाजिक जो अव्यवस्था रही ता उपरे से लेखुथिले. ह्यूमरियस स्टोरी बहुत मजाकिया ये स्टोरी गुडी को मध्य लेखुथिले एवं कोन सोशल कल्चर उपरे मध्य से लेखुथिले. He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. से विभिन्न प्राइज द्वारा मध्य सम्मानित होइछन्ती. एटा मने रहिला नहीं आमे एटी कोन जानले आमे लेखक विषय रे जानले नहीं से 15th एज रु लेखिबा आरंभ करथिले आ कोठी जन्म ग्रहण करथिले मेक्सिको सिटी रे जन्म ग्रहण करथिले एवं सेति पई मेक्सिको सिटी रे जेतु जन्म ग्रहण करथिले तांको आमे कोन करबा मेक्सिकन नोवेलिस्ट पोएट एंड जर्नलिस्ट आल्सो से थिले नहीं. So dear students, let's go to the first para. You also read with me, okay. See the smart board and you also read with me. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower.
Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. First, we will know about the unknown words. I have written here what? Unknown words. अजଣା शब्द अटे एगुड़ी डिफिकल्ट शब्द नुहे जदि आम से जिनस गुड़िक प्राक्टिस करवा ताहा आउ डिफिकल्ट होई रहिबो नाही एहा हमको अजଣା अटे जेतु आमे से गुड़ी को प्राक्टिस करनु ताहा आम पई अजଣା अटे जेतेबेले आमे जानि जिबा ताले ताहा कोन हिजबो इजी हिजबो ना जानि पकेबा ताकू सो मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स कोन कोन अछि एंटायर मींस होल क्रेस्ट टॉप मोस्ट नहीं तापरे आसला नंबर कॉर्न क्रॉप्स तो कॉर्न तापरे आसला डॉटेड विथ scattered over here you can see flowers are looking like scattered over all over the field नहीं बिछुरित भाबरे अछि तेणु एहा को कहै छी scattered over like dotted dot देला भया देखा जाउ छी नहीं तापरे आसला तमर कोन हार्वेस्ट yield तापरे आसला promised offered आमे जो प्रॉमिस करू तमे सेटा जानि छ needed required कौन तमर रिक्वायरमेंट अछि एटलीस्ट टू द मिनिमम थ्रू आउट ऑल थ्रू डाउनपोर मीन्स हेवी रेनफॉल यू कैन सी हियर नहीं शावर से सेम जिंस इंटिमेटली क्लोजली निबिड़ भावरे नहीं लेट्स अंडरस्टैंड दिस पारा द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल तो ए जो उपत्यकार जो थिला कोन द ओनली जो घरटा थिला सेटा कोडी गोटे टॉप मोस्ट रो कोडी लो हिल जोटा अछि गोटे देखु छ एठी ए हिल रो एटा सबुठ माने जो उपत्यका जो अछि से वैली एरिया रो लो हिल अटे एवं तारो किंतु टॉप मोस्ट रे तार ऊपरे थिला कोन हमरो घरटा कहारो from this height one would see the river ए height रे थाई जणे कोन देखि परिबो from this height one would see the river देखि परिबो कोन देखि परिबो the field of ripe जो corn जो पाचिथो शस्य गुड़िको से गुड़िको देखि परिबो आ कोन dotted with the flowers that always promise a good harvest जेतेबेले हमर ए फील्ड रे माने शस्य रे तमरो कोन फ्लावर्स आसी जाए सेतेबेले ताहा कोन प्रॉमिस करे ना मु गुड हार्वेस्ट माने भलो शस्य होईची बोली आमे जानि पारु तो ए हिल ऊपरु से जणे घर ऊपरु से जेतु एटा टॉप मोस्ट नहीं ऊपरे अछि आमे सेठू कोन देखि परिबा आमे रिवर देखि परिबा एही परी जो तार फील्ड अछि सेउटा मध्ये देखि परिबा The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. जेतेबेले अर्थ ए अर्थ को एटा होचे लेंचोस रो घर अटे एवं सेई लेंचो रो फार्म दे कोन हेची गुड मतलब फ्लावर्स जो तार शस्य रे भलो फ्लावर्स हेची जहा की प्रॉमिस करूची जे एबे गुड हार्वेस्ट से देई पारिबो किंतु ता पई जेतकी काम करिवा कथा हार्ड वर्किंग लेंचो करि सारिछि नहीं एबे कोन दरकार ना गोटे भलो शावर मींस माने भलो वर्षा हेबा दरकार जहा कोन कोन आनिबो आहुरी ताकू भलो भाबरे शस्य प्रदान करि पारिबो सो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड एबे जो धरापृष्ठ जोठी से शस्य कोन करछि रोपण करछि से ताकू कोन दरकार ना वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर एबे वर्षा प्रबल वर्षा ताकू दरकार थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटिमेटली तो लेंचोरो सेटा फील्ड अटे लेंचोरो ताहा भूमि अटे से इंटिमेटली बहुत माने कोन निबिड़ भाबरे से तारो फील्ड को जानिछि had done nothing else but see the sky towards the northeast से कौन करूची मॉर्निंग टू
केबे से वर्षा आसीबो जो द्वारा कि मो शस्य आहुरी अधिक रु अधिक भलो होई परिबो एवं मु भलो शस्य अमल करि परिबी सेटा से देखिबा पई से कोन करछि मॉर्निंग थ्रूआउट द मॉर्निंग ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट काहेकि ना सेही अंचल रे नॉर्थ ईस्ट पटु कोन वर्षा आसी थाए तेणु से नॉर्थ ईस्ट को हमर उत्तर पूर्व दिग आड़ को चाहि रही हला बुझिला एटा टी आमे जदी बुझी सारिबा पोरे पुणी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन गुडी को आमे डिस्कस करिबा एवं तमे माने मध्य तम खाता रे तमे जदी एई क्वेश्चन आंसर गुडी को लेखिबो ताहले तमरो सेई चैप्टर रो जो सबु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसीबो तमे इजीली करि परिबो after discussion or after completion of any of your English chapter or any of your English para what you will do you will write all those questions that comes from that para so that you will get to know everything about that para briefly. Okay, so where did Lencho live? आमे एबे फास्ट पारा रे जहा सब पढ़थिले ता आमे एबे कोन क्वेश्चन आंसर रे ता पाई परिबा वेयर डिड लेंचो लिव आमे एठी पारा रे देखिथिले द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल दिस इज द आंसर सो ताकू टिके खाली सजाडी लिखि देछि कोन ना लेंचो लिव्ड इन द ओनली हाउस सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल नहीं एटा तमे आंसर लिखिबो who did Lencho have faith in? Lencho रो कहा ऊपर बहुत विश्वास थिला Lencho had faith in God. Very easy one. What was the only one in the entire valley? Entire valley रे कौन केवल गोटे जिंस थिला ना Lencho's house was the only one in the entire valley. Next, what was dotted with flowers? कौन थिला जो डॉटेड विथ फ्लावर्स कौन ना लेंचोस राइप कॉर्न फील्ड तार जो मकार जो शस्य से रोपण करिथिला ताहा कौन डॉटेड विथ फ्लावर्स नहीं तो लेंचोस राइप कॉर्न फील्ड वाज डॉटेड विथ द फ्लावर्स व्हाट डिड लेंचोस कॉर्न फील्ड ऑलवेज प्रॉमिस कौन से प्रॉमिस करे तार कॉर्न फील्ड कौन प्रॉमिस करथला ना Lencho's cornfield always promise a good harvest. Line by line तमर दिया है देखो एठी so एठी दिया है तमर कौन and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Okay, from this line this question comes. Okay, then throughout the morning Lencho looked at the sky towards throughout the morning. What did Lencho do throughout the morning? Throughout the morning से कौन करुथिला ना throughout the morning Lencho looked at the sky towards the north east. This one important. को दिगो को देखुथिला north east आड़ को से देखुथिला. What was the only thing the earth needed? एटा हमें पढ़थिले earth कौन दरकार करछि एबे सबु हार्ड वर्क Lencho करि सारिछि एबे से कहा अपेक्षा रे अछि the only thing the earth was the earth needed was a downpour or at least a shower एबे प्रबल वर्षार अपेक्षा करिछि के हमर पृथ्वी नहीं तारो कॉर्नफील्ड कहारो लेंचुरो कॉर्नफील्ड ओके नेक्स्ट बार हमें पढ़िबा नाउ you also read with me okay now we are really going to get some water woman the woman who was preparing supper replied yes God willing the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner it was during the meal that just as Lencho had predicted big drops of rain began to fall in the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching. Okay. Next, the air was fresh and sweet. Air केमती थिला? The air was fresh and sweet. The men went out for
no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. First, आमे unknown words गुड़ी को जानी पकेबा तापरे आमे बुझिबा. Supper means dinner. Okay. Was preparing, was making. God willing माने God रो इच्छा नहीं. Willing means इच्छा. Until, not till, had predicted, had forecast. पूर्वानुमान करिबा. Huge, very big. Approaching माने coming fast. Exclaim, become surprised. Falling means dropping. Okay. तो पूर्वानुमान आमे मेघ देखी कि आमे जेतेबेले पूर्वानुमान केमती करथाउ जेतेबेले देखु आकाश रे मेघ पड़ा मेघ आसिलानी निश्चित भाबरे आमे अनुमान करथाउ कोन वर्षा आसीबो नाही. So let's understand the para. Dear student, now we are really going to get some water. की कहूची एटा लेंचो कहूची काहाको कहूची ओमेन. Here ओमेन means से की अटंदी ना लेंचोर वाइफ. So से कहूची now we are really getting going to get some water ओमेन. ता निज स्त्री को से कहूची. तापरे ओमेन कोन रिप्लाई देला. The ओमेन who was preparing से समरे कोन करथला से फूड प्रिपेयर करथला डिनर प्रिपेयर करथला. से रिप्लाई देला yes God willing means हाँ God इच्छा हेले आमे निश्चित पाई परिबा. The old से समरे तांकर जो older boys अटंती older boys were working in the field नहीं जो माने टिके बॉयज को थिले से माने कोन करथिले से माने काम करथिले while the smaller ones were playing near the house. और स्मॉलर माने से माने तो काम करिवे नहीं से माने कोन करथिले खेलुथिले नहीं near the house. क्यों पर्यंत खेलुथिले ना जेते बेला पर्यंत हमर ओमेन मींस लेंचो वाइफ तांकू न डाकिथिले कोन पई डाकिले कम फॉर डिनर. ओके डियर से तांको जो पिला माने खेलुथिले तांकू डाकिले कोन कम फॉर डिनर. So it was during the meal जेते बेले से माने मील ग्रहण करथिले तांकर खाद्य ग्रहण करथिले डिनर करथिले सेही समय रे कोन हला. It was during the meal that just as Lencho had predicted. से predicted करिथिला से पूर्वानुमान लगेथिला कोन लगेथिला ना वर्षा हेई पारे बोली. Big drops of rain began to fall. कोन हला ना big drops of rain began to fall. पड़िबाकू लागिला. In the northeast से कुआडे देखुथिला मॉर्निंग throughout the morning he was seeing towards the northeast आड़ को देखुथिला से northeast आड़ू ही बड़ा बड़ा वर्षा बुंदा पड़िबाकू लागिला. Big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. कुआडे आस्तला northeast आड़ू बहुत बड़ा बड़ा कोन मेघ कला मेघ घेनी आसुथिला. The air was fresh and sweet. कोनला एयर जो पवन जेते बेले वर्षा आरंभ हुए से समय स्वीट एंड फ्रेश एयर हमकु मध्ये भल लागे वर्षा रे कोन वर्षा जेते बेले आरंभ हुए सेते बेले बाहरिबा को भल लागे कि नहीं. स्वीट स्मेल जेते बेले वर्षा प्रथमे पड़े हमर जो माटीर सुगंध सेटा बहुत बढ़िया लागे नहीं. The men went out for no other reason. The man जेते बेले वर्षा घिनी आसिला सेते बेले से मैन बाहर को आसिला. मैन मींस हियर के लेंचो बाहर को बाहर आसिला कोन पाई ना टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. सी ए छुआ जंती कोन करछि से फील करूछि वर्षार जो प्रथम जो वर्षा वर्षण होउछि तार ताकू से सेतिरे भिजी की कोन तार फील नउछि नहीं. सेमती लेंचो जो से अपेक्षारत थिला कोन पई ना वर्षा पई एवं से वर्षा जेते बेले आरंभ होला से आउ मील ग्रहण करिवारे से आउ तार मन नथिला से बाहर को फील करिवा पई पळे आसला कोन से फ्रेश एयर स्वीट स्मेल एवं वर्षा बुंदा को से फील करिवा पई बाहर को पळे आसला. तापरे एंड व्हेन ही रिटर्न he exclaimed से कहिला कोन these are not
रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एगुड़िक रेन ड्रॉप्स नुहंती कौन अटे दे आर न्यू कॉइन्स सेगुड़िक नुआ कॉइन्स अटंती कौन पाई द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 बड़ बड़ जो वर्षा बुंदा पड़ुची ताहा 10 सेंट एहा आमे ए जो स्टोरीटा आमे केउ सिटी रो से को सिटी रो अटंती जो लेखक अटंती से होचंती मेक्सिको सिटी रो नहीं सो सेठारे हमर जेंती एठी रुपीस चले सेठी कोन चले सेठी चले सेंट नहीं सेठी पई 10 सेंट और 5 सेंट से कहिसंती जे जो बड़ बड़ वर्षा बुंदा पड़ुची ताहा 10 सेंट एवं जो छोटो बुंदा अछि ताहा 5 सेंट नहीं सहित ताकू तुलना करिसंती एबे एटा सेकंड पारा गला तार कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हमें डिस्कस करिबा सो दैट यू कैन go through all the lines properly. Whom did Lencho inform about his prediction? से जो prediction से जो पूर्वानुमान कला से ता विषय काको कहला Lencho informed to his wife about his prediction. हमें एठी देखिला वुमेन कहि के से जो संबोधन कला कि नहीं से काको से कला ना to his wife. Okay. Like this, you also, after finishing one chapter, when your teacher will finish one chapter, you try to write each and every question. Whatever question you can get from that chapter, please write down and also write down your answer. Okay. See, what was Lencho's wife doing then? से समय रे जेतबेले से कहिला तार लेंचोर वाइफ कोन करथला और करथला ना लेंचोस वाइफ वाज प्रिपेयरिंग सपर देन सपर माने हमें जानले कोन जानले ना रात्रि भोजन नाही सेही समय से डिनर प्रिपेयर करथला व्हाट वेर द ओल्डर बॉयज डूइंग ओल्डर बॉयज माने कोन करथले से माने कोन करथले वर्किंग इन द फील्ड नाही the older boys were working in the field next where were the smaller one playing smaller one mane kouthi khelutile nearby house yes where were the smaller one playing okay who will give the answer see after this chapter when we will finish we will discuss multiple choice question okay so the smaller ones were playing near the house semane kheluthile when big drops of rain began to fall kete bele borsa boda boda borsa bunda padila na the big drops of rain began to fall when Lencho was taking his meal jete bele se meal grohana karuthila se samay re kon hela ବର୍ଷାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା how did Lencho fell when his prediction become real field this one wrongly spelled that one is field से केमिति अनुभव कला जेतेबेले वर्षा तार जो प्रेडिक्शन से करिसला ताहा जेतेबेले सतरे परिणत हला से केमिति फील कला Lencho was extremely happy से बहुत हैप्पी हे गला नहीं when his prediction became real जेतेबेले ता सतरे हे गला Why did Lencho go out? कौन पाई जाइथला ना Lencho went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. से pleasure कौन जो वर्षा हैला से वर्षा रो फीलिंग से नेबा पाई बाहर को बाहरथिला नहीं तापरे असला what did Lencho tell about the rain drops falling from the sky? से जो rain drops जो पडुथिला तांको से कौन कहला से कहउतला काना ना Lencho told that those were not raindrops taha raindrops nu hai falling from the sky they were new coins okay segudi ko raindrops nu hai segudi ko ate new coins ta pai thila new coins kahi ki se koila kahi ki na तार जो सत्य से रोपण करथिला ता pai एबे कोन दरकार थिला rain दरकार थिला after rain segudi ko कोन हिजबो रेन जेते बेले एबो से गुड हार्वेस्टिंग आहुरी तार हार्वेस्टिंग आहुरी बढ़िया से भलो भाबरे शस्य अमल करि पाइबो एवं जेतकी से शस्य अमल करिवो ताकू सेही हिसाब रे कोन मिलिबो टंका मिलिबो सेति पई से रेन ड्रॉप्स गुडी को कोन से टंका सहित तुलना करूथिला सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पारा with you also read with me
see the smart board and read. Try to read. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. So, this one is the para. Let's understand the unknown words. So, what are the unknown words? When with a satisfied expression, means with a content santoshar abhivyakti sah. Okay. Regarded means thought or considered. Considered kariba. Draped means covered. Hailstones means here କୁଆପଥର ତମେ ଦେଖିଥିବ ନହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି କୁଆପଥର ବଡ ବଡଟା ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା did resemble look alike ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯିବା look alike. Exposing themselves to the rain means coming out to the rain. ନିଜକୁ ବର୍ଷାରେ କଣ expose କରିବା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା. Frozen pearls means very cold, small, white, solid, bead-like substance. This one frozen pearls भड़िया जो छोटे छोटे थाए कुआपथर गुड़िक सेटा कौन देखा जाए pearls भड़िया देखा जाए अति शीतल मुक्ता बा मोती. First understand the para. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers draped in a cotton of rain. जिते बेले वर्षा हैला ताकू बहुत माने satisfied feeling हैला जे जहा चाहूतला ताहा एबे मो corn field रे कोन होची वर्षा होची जहा मते good harvesting ପାଇଁ help करिवो. But suddenly this से जते बेले पूरा satisfiedly पूरा extremely happy होतला किंतु suddenly कोन हैला a strong wind began to blow. पूरा strong wind आहुरी बहिवाकु लागिला एवं and along with the rain very large hailstones. You can see here also you can see what are they hailstones बड़ बड़ कुआ पत्थर गुड़िक पड़िवाकु लागिला नहीं. This truly did resemble new silver coins. से गुड़िक silver coin भलिया देखा जाउ थाए. First सेटा कोन से रेन को से कंपेयर करथला का सहित हमर रुपीस सहित से कोन करथला न्यू कॉइन सहित तुलना करथला किंतु तमे एटा कंफ्यूज हबो नै से वर्षा बुंदा जो स्टार्टिंग रे पडिला ताकू से कंपेयर करला का सहित न्यू कॉइन सहित तुलना कला नै बडो रेंडर्स को 10 सेंट आ छोटो रेंडर्स को कोन 5 सेंट रे किंतु जते बेले कुआ पथर पडिला ताकू से का सहित कंपेयर करछि हेल्स्टोन्स गुडी को से कंपेयर करछि लाइक हमर हेल्स्टोन्स began to fall. These truly did resemble new silver coin. से नुआ नुआ silver coin सहित ताकू रूपार मुद्रा सहित से तुलना करिछि. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect frozen pearls. छुआ माने जतबेले से कुआ पथर पडिछि ताकू एक्साइटमेंट रे ताकू गोटेवा पई जाइछन्दी नै. You can see here. It's really getting bad now. जतबेले एही जो वर्षा होतला ताहा ठीक अटे ताहा सत्य पई दरकारी. But when जतबेले कुआ पथर वर्षण hailstone जतबेले वर्षण हैला that extremely go bad. Why? I hope it passes quickly. से चिंता करथला एहा शीघ्र अति शीघ्र ताहा बंद हे जाऊ ताहा जो कुआ पथर वर्षण होउची ताहा बंद हे जाऊ मात्र for an hour एक घंटा ताहा continuously वर्षण हेबारे लागिथिले. The garden, the hillside, the cornfield, all things are covered with that hailstones. नहीं on the whole valley टा कौन हो जाइथिला ना hailstones रे covered हो जाइथिला. ए चित्र जेंति देखा जाइछि सेही भली hailstones सबुआडे covered हो जाइथिला. तार घर जो नेकरी river तापरे आसला तमर green field, all things covered with that hailstones, and the field was white as if covered with salt. एवं से फील्ड टा कौन देखा जाउतला as if it was covered with salt.
लुण रे जेमती कवर हेछि सेई भली देखा जाउतला. You can see here like this. All things are covered with hailstones. So let's discuss this question. See, what did begin to fall along with the strong wind and rain? कौन ना very large hailstones began to fall along with strong wind and rain. नहीं बड़ बड़ कौन आमर hailstone गुड़िक बढ़िबारे लागिला. What did the hailstone truly resembles? hailstone गुड़िक कहा सहित resemble करथला कहा भली देखा जाउतला ना the hailstones truly resembled with the new silver coins. मु जेंति कहली से समय रे कोन हमर रेन ड्रॉप्स को तुलना करा गला सेंट सहित 10 सेंट बिग रेन ड्रॉप्स 10 सेंट एंड स्मॉल रेन ड्रॉप्स कोन 5 सेंट सेही परी एठारे hailstones गुड़िक कहा सहित कंपेयर करा गला ना सिल्वर कॉइन सहित. Why did the boys run out? कौन पाई से माने बाहर को बोले ना the boys ran out to collect the frozen pearls. से माने frozen pearls जे जो पड़ीला ता से गुडी को कोन गोटेबा पाई जाइथिले. It did not pass quickly. What did not pass quickly? कोन passes होनोतला quickly ना the hailstones did not pass quickly. से जो वर्षण होतला ताहा शीघ्र सॉरी माने ताहा बंद हैला नाही. How did the field look like after the hailstone? Hailstone pore se valley da kemti dekha gala na after the hailstone the field was white as it covered with salt. जेमती ताहा salt रे cover होइछि सेही भली ताहा देखा जाउतला. Why was the corn totally destroyed? काहे कि totally destroyed होई गेला. The corn was totally destroyed due to terrific hailstone. ए जो कुआपथर वर्षण हैला सेथि पई हमर कोन तार जो कॉर्न फील्ड ता टोटली डिस्ट्रॉय होई गला. So let's go to the para number 5. You also read with me. Okay. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. Sobhito. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. यहाँ किए कहिछि ना हमर लेंचो से प्रेडिक्ट करि से कहिसंती sorrowful way रे. Okay, first understand the unknown words. Really प्रकृत रे बा वास्तव रे. I hope it passes quickly. I hope it. एठारे it कागु कहछि जो hailstone होतला नहीं. The rain of hailstone जो होतला कुआपथर वर्षण होता ता जल्दी disappear हे जाऊ. तापरे as though rain means pour down, remained माने थिला was totally destroyed, was completely ruined, were gone, were disappeared. Okay. Was filled with sadness, was grief stricken means किए कहार हृदय दुख रे पूर्ण होई गला लेंचोर हृदय नहीं. When the storm had passed, after the storm had abated माने storm गला परे. तापरे ऐसा a plague of locust means a group of crop destroying insect. एई बोली देखा जाए. You can see here एगुडी को कोन करंती आम क्रॉप आमर शस्य को नष्ट करि दियंती. एगुडी को एमाने जतेबेले दलबद्ध भाबरे ग्रुप रे माने आसंती एमाने बहुत बड़ बड़ शस्य क्षेत्र को मध्य कोन कर दियंती नष्ट कर दियंती. Would have left more than this, would have destroyed less than the hailstone. Sorrowful means having sadness, sorrow dukha nahi. We will all go hungry, we will all go without food. Okay, काहे without food से माने जिबे तो हाँ तुम्हें जानी पारुछो. एबे हमें बुझीबा
हमर ए पारा को not a leaf remained on the trees after the hailstorm. जो एमिति कुआ पथर वर्षण हैला शस्य किबळी देखा जाउतला पूर्वे एमिति देखा जाउतला आफ्टर द hailstorm कोन हैला ताहा तार पत्र मध्य से गछ गुडे रहिला नाही पूरा रुइंड हे गला पूरा डिस्ट्रॉय हो गला नाही हेले the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. देखा एठी जेमती पूरा फ्लावर्स भर्ती हेकरी थिले आफ्टर द हेलस्टॉर्म कोन हेछि फ्लावर्स गुडी को मध्य नाहंती लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस से जति की एक्सट्रीमली हैप्पी होतला सेंती कोन हेगला तार मन दुखरे भरी गला when the storm had passed he stood in the middle of the field says middle of the field रे छिडाला आ कोन हला and said to his son तांको तार पुआ मानको कहिला ए प्लेग ऑफ लोकस्ट ए जो कीट जो शस्य खांती कीट से माने दलबद्ध भाव में आसिले मध्य एई भली से माने शस्य क्षेत्र को नष्ट करी न थांते जेमिति हेलस्टॉर्म द्वारा हमर कोन हेछि एई शस्य क्षेत्र गुडी को नष्ट हो जाइछि एमिति तो नष्ट कोन एई कीट मध्य करी न थांते से माने आसिले किछिटा हमर शस्य बंची जाई थांता मात्र दिस hailstorm ruined a lot instead in compared to this locust ए माने जदी आसी थांते ताहले हमर शस्य कोन हितांदा एते मात्रा रे ruin होई न थांता but these hailstorms they destroyed everything. This year we will have no corn. एही year हमें बिल्कुल कुछ शस्य पाई परिबा नाही. That night was a sorrowful one. जेतु सबु शस्य नष्ट हो जेछि तांको पई ताहा दुखर दिन all our work for nothing. से माने जो एते कष्ट एते हार्ड वर्क करिथिले ताहा सबु धुलिसा हे जेछि नै nothing. से माने तांगर किछि फळ मिलिला नाही. That there is no one who can help us. केहि नाहंती तांको साहाଯ୍य करिबा पई we will all go hungry this year जेहेतु तांगर शस्य समस्त नष्ट हो जाइछि सेमानंकु एई जो वर्षटा तांकु कोंती बितेबा पे पड़िबो we have to live hungry तांकु भोकिला रहिबा पई पड़िबो. I hope you have understood all the paras. So just see what was totally destroyed. कोन totally destroy हो गला The corn was totally destroyed. Corn जो corn थिला से उडी को totally destroy हो गला. What was filled with sadness? का कोन sadness रे भरी हो गला ना लेंचो soul. लेंचो रो अंतरात्मा तार आत्मा कोन हला ताहा दुख रे भरी गला filled with sadness. This year we will have no corn. Whom did लेंचो say so? से कहा को ए जिंसटा कहला ए लाइन टा लेंचो said so to his sons. ता पुत्र मानकु से कहिला. What did Lencho think about the year? से कोन भाबिला ना Lencho thought that they would go hungry that year. से hungry तांको एही वर्षटा भोकिला रही की बितेवा को पड़िबो. Why did Lencho prefer locust to the storm? Locust आसीथिले मध्य भलो हिथांता से कहिला नाही से कीटनाशक जो कीट जो अछंती शस्य खाइबा से आसीथिलंते ताहले मध्य हमर शस्य एमिति नष्ट होई न थांता सेंती कहले ना द hailstones had completely destroyed काई कि सेंती कहले ना hailstone जो आसीला कुआ पथर वर्षण हैला ताहा तांको शस्य को मूलरु कोन कर देला ताको नष्ट कर देला destroy. Lencho's ripe corn field. Lencho thought locust would have left some corn तांको पई किछि corn को कोन करथांता से untouched करिकि माने किछि शस्य तांको पई बचै देई थांता but this hailstorm destroyed all the things. So dear students, let's discuss the question answer. I hope you have understood all the things and you will give answer nicely. Okay, so from Lencho's house, one would see the field of ripe corn and the hill, the river, the green field, the garden. What is the answer? The first line you have read about this. The river. Very good. The river is the right one. Throughout the morning, Lencho saw the sky towards this. से कुआड़ देखुला
The northeast. The northeast. Very good. The northeast. Very good. Who said yes, God willing? କିଏ କହିଥିଲା yes, God willing? Lencho's wife. Lencho's wife. Very good. Lencho's wife. Next, when Lencho's wife called her children to have dinner, the older children were older children गुड़ा कौन करथिले? Older children गुड़ा Working in the field. very good. Working in the field. These are very easy. I think तुमको ये चैप्टर टा को आउ थरे पढ़िबा पाई पड़िबोनी. अरे hey. Next, Lencho came out leaving his dinner to death. Lencho came out have see. What is the answer? Read out. To enjoy field. To enjoy and feel the rain on his To enjoy body. Okay. Enjoy and feel the rain on his body. Next, Lencho considered the raindrops as raindrops को से कौन consider करूँगा? Who will answer? Another school, please. Yes. new coins. Very good. New coins. Next, the big drops of rain are treated as big drops को से किभଳି treat करूँगा? Big drops of rain you are treated as Pieces. 10-cent pieces. 10-cent pieces. Very good. Next, the hell rained for days on the valley. केते समय धरी वर्षा आला? 1 hour. 1 hour. 1 hour. Very good. Very good. Next, Lencho was an ox of a man. Here, an ox of a man means ସେ ବହୁତ କଣ ଥିଲା? ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା ନାଇଁ? He works like an ox. No, that is not the answer. He was hard working. Okay? He was hard working. This one is the right answer. Next, after the hailstorm, the field looked white as if field Covered white with salt. देखा ना? Very good. Covered with salt. Next, in the story A Letter to God, the small children played. कोठी खेलुतिले? Oh, sorry. कोठी नहीं. Played. Until their mother called them to have dinner. Option C. Until their mother called them. Yes, dear student. C. Option C is the right one, but you have to spell called. Okay, not called. Until the mother called them to have their dinner. Okay. Next, G.L. Fluent started writing stories at the age of केते age रू से लिखिबा 15. start करथिले? At the age of 15. Very good. Very good. This is all about your question, sir. Next, write down this as a homework and show to your teacher. I hope you understand the chapter very well, and please remember, after finishing every chapter, every para, whenever your teacher is teaching any new chapter, try to write down line by line, and also try to make questions and also write the answer, so that you will easily understand the chapter, as well as you will able to answer the multiple choice question when you're in your exam also. Okay. Thank you, dear students.